supposed to walk on this. No. Okay, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस जिसे अंग्रेजी में कहते हैं विंट्री चिली आफ्टरनून, और हिंदी में बोलेंगे कि ठंड से ठिठुरते सर्द हवाओं के साथ इस भरी दोपहर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक खास फिल्म के लिए हम सब ने आपको बुलाया है, आमंत्रण भेजा। ये आमंत्रण अपने आप में अनोखा है हमारे लिए। हम बहुत सारी फिल्मों का प्रमोशन करते हैं, बहुत सारी फिल्मों के हिस्से होते हैं, बहुत सारी फिल्मों के लिए साक्षात्कार करते हैं, इंटरव्यूज देते हैं, लेकिन अलीगढ़ अपने आप में अनोखा इसलिए है कि अलीगढ़ को जो बना रहा है या जिसने बनाया है या अलीगढ़ के साथ जो भी जुड़ा है, उसको ये बार बार बोला गया कि ये फिल्म करने के पहले आप 50 बार सोचिए। और शायद आज हम उस मुकाम तक या इस मुकाम तक इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि उन सारे लोगों ने जो इस फिल्म से जुड़े, चाहे वो इरोस हो, चाहे वो हंसल मेहता हो, चाहे वो शैलेश हो, या बाकी के जितने भी कास्ट एंड क्रू हैं, उन सब ने उस वार्निंग को, उस चेतावनी को दरकिनार किया और आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। And today when you go on social media, each and everybody is welcoming this decision. So I think this is our first big victory. This is the first hurdle we have crossed with the help of yours, with the help of the audience which is there waiting for this film. But today I'm going to say something else. हमने आपको भेजा, आमंत्रण किया, निमंत्रित किया इस अवसर पे, न सिर्फ आपके साथ फोटो खिंचवाने के लिए, न सिर्फ आपको साक्षात्कार देने के लिए, बल्कि आपसे सपोर्ट मांगने के लिए। हम चाहते हैं कि कम आउट, हैशटैग कम आउट का इस्तेमाल करके आप जितने चाहे मैसेजेस, जितने चाहे संदेश आप भेज सकते हैं और इस फिल्म को सपोर्ट कर सकते हैं, उतना ही इस तरह की फिल्मों को फ़ायदा होगा और हम जैसे लोगों का भी फ़ायदा होगा। और कंटेंट ड्रिवन फिल्मों का यह सिलसिला जो चल रहा है और आगे जाकर के एक बड़ा रूप लेगा। Now I'll talk about somebody whom I have seen for the first time when I was doing Chittagong, somewhere in North Bengal. Young boy, full of dream, full of enthusiasm, desperate to prove himself all the time, but a good at heart. Somebody that, from the first day I related to him in Latagodi in North Bengal. And from that day till now, we are great friends. We are very good friends. I have a lot of admiration for this man. Not only because, he's a good guy, but also because there is so much of passion. Without thinking what he's going to get out of it. But once he's convinced about something, he just goes ahead and gives everything that he has. That's all an actor can do. That's all we have. To use our passion to achieve whatever we want to achieve in our life. Somebody who hasn't thought even twice before, taking this decision to be part of Aligarh. Somebody I really envy, because in the time when the good films are happening, in the time when such great directors like Hansal Mehta are making film, he's just there in the right age. And people like me and so many actors like me, we spent our time waiting at home, waiting for that one script to happen. And those films used to be very rare. So Rajkummar, not only I welcome you, I envy you. Come on, Rajkummar. Okay, now I'll hand out the mic to him and ask him to do the difficult job of talking about his experience in working in Aligarh. First of all, thank you so much, sir. So whatever passion that you were talking about, you're the reason behind that passion.
You ignited that passion in me. I remember when I was growing up in my school years, I watched Shul, and I thought, this is what I want to be. This is what acting is. So thank you so much for giving us those lovely, inspiring performances. And same like Aligarh, I think Aligarh is one of your best work till date. I was so thrilled when I got to know that you are playing Professor Siras. And thanks to Mr. Mukesh Habda, who suggested your name to Hansal sir. Working on Aligarh and working with Hansal sir and Manoj sir, it's a dream team for me. I couldn't ask for anything better than this. I always learn so much working with Manoj sir. I have worked with him before in Chittagong. And with Hansal sir, we all know like he's like my family. It's always a responsibility on me, on my shoulders, to do something different with my characters. I should not remind him of his last film, of his last character. So he challenges me as an actor, and I always take that challenge as an honor. So thank you so much, sir. Thank you for giving me this chance again. And I'll do anything and everything for you forever. Thank you. Great. Sir, but I have a request. Yeah. You know, we have worked together on 2 films. This is, of course, a bigger film, and we have spent a number of days together. I don't have any single picture with you. So do you think I can take this opportunity and have a selfie with you? I'm very bad with selfie. I'm not. It's fine. Okay. You are a very good-looking man, sir. Thank you. किसी ने पहली बार बोला good looking. आदमी ने पहली बार बोला सर, औरतें बहुत बोलती हैं. Okay, now is the turn of the captain of the ship. कप्तान के आने का समय हो चुका है. कप्तान के बारे में थोड़ी सी बात करूंगा मैं. मुझे अच्छा लगता है इस आदमी के बारे में बात करना. 93 में जब पहली बार मैं आया था मुंबई शहर पे, मुझे बहुत डर लगता था क्योंकि एक अच्छा खासा रंगमंच छोड़ के आया था. मैं थिएटर कर रहा था और यहाँ पर एक बहुत अच्छा दोस्त था मेरा जो ऑलरेडी शिफ्ट कर चुका था. वो था आशीष विद्यार्थी. इस फिल्म में उन्होंने कमाल का काम किया है. अब आशीष विद्यार्थी इस आदमी के साथ काम कर रहे थे. ये निर्देशक थे उस समय, एक टीवी का टेलीफिल्म बना रहे थे. तो पहली बार जब मैं काम किसी से मांगने गया था तो इस शख्स से मांगने गया था. और मैंने सुना था कि यहाँ पर डायरेक्टर्स जो है वो भगा देते हैं, बहुत ही रूड होते हैं. लेकिन ये व्यक्ति जिस अंदाज में मुझसे मिला और जिस तरीके से मिला, आई मीन फ्रॉम दैट डे टिल नाउ आई एम ग्रेटफुल टू दिस मैन ओनली फॉर दैट जेस्चर दैट he's shown when I went out to meet him. But apart from that, he's become a very close friend of mine. He's been part of my ups and downs. He's part of my misery. He's been part of my miserable time. He has seen the bad temper, the good temper of Manoj Bajpayee. He's seen me, moving everywhere, not meeting him. But one thing we always made sure to do, and that was talking to each other on the phone, getting in touch with each other. Always, in any time of crisis or any time of celebration. But I will never forgive him for not coming to me directly. He could not think of me as Siras. And Mukesh Habda, the casting director, suggested my name. Somebody who is so close to me, he could not think of my name. But Hansal, I have forgiven you for this. You know why? I have seen the film and I have seen the trailer. तू चाहे लाख पाप कर चुका होता तब भी तुझे माफ कर देता. तो तू ऊपर आ जा, गले मिलते हैं और माफी दे देते हैं. अच्छी सी ताली बजाइए. अलीगढ़ बनाने के लिए बहुत ताकत चाहिए होती है.
अभी हंसल से हम हंसल के नज़रों से हंसल की जो पर्सपेक्टिव है या पॉइंट ऑफ व्यू है उसको हम सुनने की कोशिश करेंगे। एक मौका है क्योंकि यहाँ से हमारा प्रमोशन शुरू होता है जो कि देश के हर कोने में जाएगा, और हमारे समीर गोगटे साहब इरोज का अगर दिल आया तो हम लोग विदेश में भी जाएंगे। Okay, Hansal, can you share a few of the moments that we've shared? First, I want to just thank media. Right. The media has been very, very supportive from the time we have announced Aligarh. जब हमने पहला लुक अनाउंस किया, जब हम शूटिंग कर रहे थे, उस दिन से लेकर आज तक मुझे पता है कि आज बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं, फिर भी आप इतनी बड़ी तादाद में यहाँ आए हैं, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ. I am really, really thankful. Keep supporting us this way. I just want to add on that, sir. In this film, I'm playing a journalist, so now I can totally understand how much effort and pain you guys put in for a story. So thank you so much. Thank you, really. So I want to thank all of you. And हाँ, मुकेश छाबरा को बहुत थैंक यू बोल दिया. थैंक यू मुकेश. मैंने राजकुमार को कास्ट किया था. एंड नहीं ये अलीगढ़ बहुत ही इट्स अ वेरी स्पेशल फिल्म, क्योंकि इसमें एक तो पर्दे के सामने मतलब आप देख रहे हो दो मतलब शायद भारत के सबसे अच्छे एक्टिंग टैलेंट को, टू इंडियाज फाइनेस्ट एक्टिंग टैलेंट्स आर लॉकिंग हॉर्न्स ऑन स्क्रीन. दे आर नॉट प्लेइंग लवर्स, बट आई थिंक समवेयर इन द फिल्म दे फॉल इन लव with each other, and along with them there's an ensemble which has done a wonderful job, but behind the scenes we have, I think, perhaps one of the finest teams that I could have got to make this film. I have not made this film. This film has been made because of perhaps the blessings of Professor Siras. First of all, Professor Siras, his story fell into my lap. That story fell into my lap. The fact that I got attracted to the story and I took it to my long-time collaborator, brother, friend Apurva Aswani, who has been editing my films. I asked him to write it, and he wrote, "Apu, you have written your life's best script in your first film. I don't know what you'll do next." I found this wonderful director of photography, Satyaran Nagpal, who's sitting there quietly in that corner. Can you both of you join us? Please join us. Please, Satya and Apu. Satya, Apu. For the first time in my career, I thank you, Eros. I could afford a production designer. Indranil. Indranil, come up. And for the first time, I had a producer who did not interfere with me. Shailesh Singh. And the guy who's taking all the credit for casting Manoj, Mukesh Chabra. और हंसल के बेटे तुम ऊपर आ जाओ. जय, the chief AD of our film. पिया कहाँ पे हो? Our costume designer. She's Pia dressed me Benegal. so well. As Siras. Pia has done costume for me in Zubeda. So it's a very long and old association which has been continuing since a long time. Alok. So Pia, thank you very much for coming all the way. Alok. So ऐसा लग रहा है जैसे मतलब अभी हमने नाटक जो है we have just performed our play. Okay. But this is not only the team. I mean, there are 60, 70 people who put in their sweat and blood to make it happen the way it has happened. And thank you, Apu, for writing such a fantastic role for me. And it had everything. I just had to work hard. That's it. Raj, thanks again. Hansal, thank you very much. You've always been very, important part of my life. I thought you were going to say you've always been very patient. Yeah, I was very patient.
नो जिस तरह की जिस आप दोनों से, हंसल आपसे भी और मनोज आपसे भी, जिस तरह की फिल्म को फिल्म को अप्रिशिएट करा जा रहा है, आपके परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करा जा रहा है मनोज, और हंसल जी ने कहीं कहा कि ए सर्टिफिकेट इस तरह के ट्रेलर को, और यकीनन ट्रेलर में कुछ भी ऐसा नजर नहीं आता जिस पे ऐतराज करा जाए। इसके लिए क्या प्लानिंग है आपकी? यकीनन मीडिया तो आपके साथ है जैसे आपने कहा शुरू से लेकर अब तक, लेकिन आपकी अपनी अपनी खुद की रणनीति क्या होगी? रणनीति वही है जो हमारे संविधान में हमें जो रणनीति दी गई, अधिकार दिए हैं, वो हम करेंगे। हम खटखटाएंगे, अभी हम जाएंगे ट्रिब्यूनल के पास, उनसे बस यही है कि हमारे पास 1 महीना रहता है फिल्म को प्रमोट करने के लिए। और ये फिल्म न सिर्फ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंटरटेनमेंट मीडियम है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फिल्म है हमारे देश के लिए, बहुत महत्वपूर्ण फिल्म है। और ऐसी फिल्म के प्रमोशन पे ये इन्होंने रोक लगा दी है ए सर्टिफिकेट देकर, क्योंकि ये ट्रेलर सिर्फ ए सर्टिफिकेट वाली फिल्म्स के साथ चल सकता है। तो ये उन्होंने रोक लगा दी है एक महत्वपूर्ण फिल्म पर। इस सरकार के अपॉइंटेड सेंसर बोर्ड ने रोक लगा दी है। तो मैं इसके खिलाफ आई एम showing you the trailer in protest. I'm showing it to you in protest and absolute anger. ओके मनोज, आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से हंसल ने कहा कि ट्रेलर तो दिखाया है लेकिन कहीं कहीं नाराजगी है, कहीं गुस्सा है इस बात का कि ए सर्टिफिकेट की, और यकीनन बहुत महत्वपूर्ण फिल्म है, बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है, एक पैगाम के साथ फिल्म है। नहीं, हम लोग जब हमने सुना था कि ट्रेलर को ए सर्टिफिकेट मिला तो पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि ट्रेलर को भी सर्टिफिकेट मिलता है क्या। और तो नहीं, 22 साल के करीब में पहली बार मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि ट्रेलर को भी ये सर्टिफिकेट मिलता है। लेकिन मैं देखूं, अगर डिजिटली अगर आप जाके देखें तो कई सारे प्रोडक्ट्स ऐसे आ रहे हैं, वो अच्छे हैं, सबको बनाने का अधिकार है, लेकिन मुझे लगता है कि डबल ए सर्टिफिकेट उन ट्रेलर्स को मिलना चाहिए। इस बेचारे ट्रेलर को तो बख्श देते हैं क्योंकि इसमें तो सिर्फ सीरियस अपनी बातें किए जा रहा है, कोई ऐसी चीज़ हो नहीं रही है, ना कही जा रही है जिससे कि एक बच्चे की सेंसिबिलिटी को धक्का पहुंचेगा। मतलब वी आर ऑल टेकन अबैक, वी आर ऑल शॉक्ड। हंसल ने सही कहा कि कहीं ना कहीं चीज़ों को फिर से सुधारने की ज़रूरत है सेंसर बोर्ड के लेवल पे। मैं तो एक्सट्रीम पे सोचने वाला आदमी रहा हूँ इस मामले में, कि मेरा तो मानना है कि सेंसर जैसी कोई चीज़ होनी नहीं चाहिए। एंड ख़ास करके इस तरह के समय में जहाँ पर डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया और टेलीविज़न मीडिया से भी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है। ऐसा सब्जेक्ट चूज करते हो सर तो मॉरल पुलिसिंग तो होनी ज़रूरी है, राइट? No, this is, I mean, when the censor board, obviously when they saw the film, I have just received the letter where they've asked for certain cuts. I'm a bit surprised at the cuts that they've asked for. They are the film in many ways. I mean, it's about loneliness, about relationships. It is about dejection, and it's about a homophobic society. What has happened is that the censor is behaving exactly like the people who suspended Professor Siras. They are behaving like the homophobic society that did this to Professor Siras. So, the cut that they've asked for in the film, again we are taking it to the tribunal. It is just you are breaking the back of a smaller film. You are making us run around pillar to post when we should be taking the film to you, showing the film to as many members of the media, as many important people as possible, and promoting it so that these films are seen and more films like this are made. At that time, we are running around to the censor board, to the tribunal, trying to answer why, justifying free expression. What is the subject? What is the subject? Homosexuality is a sexual preference. और मॉरल पुलिसिंग करने वाले कौन है भाई? कोई भी नहीं। मॉरल पुलिसिंग करने वाला है कौन जो ये कह सके? एक बहुत पुराना गाना है, आप पैदा भी नहीं होंगे, वो उस समय गाना आया था कि वो रोटी फिल्म का गाना था कि जिसने खुद गुनाह नहीं किया है वो पहला पत्थर मारेगा, जिसने पाप ना किया हो पापी ना हो। तो मॉरल पुलिसिंग करने का अधिकार हम में से किसी को नहीं है एक दूसरे पे। और ऐसा तो है नहीं कि कोई हमने कत्ल किया है फिल्म बना करके। हम वो सारे काम कर रहे हैं जो संवैधानिक रूप से हमें जो अधिकार मिला है उसके अंदर ही कर रहे हैं।
उससे बाहर जाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। मेहता सर, कल आपने करण जौहर को मूवी दिखाया था यहाँ पे आपके यहाँ, तो क्या उनका रिएक्शन था और क्या रीजन था उनको दिखाने के लिए? रिएक्शन आपने मीडिया पे देखा है, मतलब मुझे दोहराना थोड़ा सा एम्बैरेसिंग लगता है कि जब मतलब बहुत ज़्यादा तारीफ आप सुन लो तो मतलब उसको दोहराना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। बट रीजन क्या था बिहाइंड दिस? बिकॉज यू नो, अगर रीज़न आप करण जी से पूछिए। मैं तो बहुत कि फ्रेटर्निटी, फिल्म फ्रेटर्निटी के मतलब हम लोग हमेशा समझते थे कि हम आउटसाइडर हैं इस फ्रेटर्निटी में, हम बाहर के लोग हैं, और एक वो लोग हैं जो बड़े स्टार्स के साथ बड़ी बड़ी चकाचौंध वाली फैंटेसी फिल्म्स बनाते हैं, और हम लोग हैं जो हम एक फिल्म बनाते हैं जिसमें आर्ट और कल्चर और इन चीज़ों को हम अपहोल्ड करने की कोशिश करते हैं। तो एक अंतर हमारे मन में था। कल जब करण को फिल्म दिखाई, मतलब मेरे कैरियर के 20 साल में पहली बार करण जौहर से मिला मैं, तो मुझे लगा कि वो अंतर नहीं है एक्चुअली, क्योंकि उसने फिल्म को अपना लिया था कल। ये मैं करण के बारे में कहना चाहूँगा कि करण ने एक फ़िल्म बनाई थी दोस्ताना 2008 में शायद, और दोस्ताना में जिस तरीके से करण ने होमोसेक्सुअलिटी को डिपिक्ट किया था, उससे मैं बहुत नाराज़ हुआ था, क्योंकि उसमें ऐसा दिखाया गया था कि होमोसेक्सुअल लोग सिर्फ कॉमेडी या मजाक उड़ाने के लिए स्क्रीन पे हम दिखाते हैं उनको, और ये हमारा ट्रेंड चलता है। क्योंकि हम होमोफोबिया क्या होती है? होमोफोबिया ऐसा थोड़ी होता है कि यू आर गे, आई डोंट लाइक यू। वी विल फाइंड सम अदर वे टू मेक फन ऑफ यू, टू से कि तुम हमसे अलग हो। ये ट्रेलर में भी जो हुआ है ये होमोफोबिया है। हम कह नहीं सकते इस सोसाइटी में कि हम अलाउ नहीं करेंगे ऐसी फिल्म को, तो हम फिल्म को इस तरीके से मारेंगे, अटैक करेंगे, एक कैरेक्टर को हम अफेक्ट करेंगे। तो करण के साथ यही हुआ था। तो आई वॉज वेरी वेरी अपसेट। मैंने आर्टिकल लिखी थी मैंस वर्ल्ड में करण के खिलाफ, दोस्ताना के खिलाफ, और करण और मैं जब मिले 2-3 बार तो वी वर वेरी कट्टी विद ईच अदर, यू नो। बट व्हेन द प्रमोशंस ऑफ दिस फिल्म बिगैन, और करण ने देखा और करण ने पढ़ा कि स्क्रीनिंग्स के बाद, फेस्टिवल्स के बाद, कि मतलब इस फिल्म का मुद्दा असल में क्या है, कि ये सेक्सुअलिटी से आगे है कि आप अपने कमरे के अंदर अपने प्राइवेट स्पेस में जो करते हैं ये आपका प्राइवेट बिजनेस है। किसी को कोई अधिकार नहीं कि वो आपके कमरे के अंदर आए और पूछे। तो मॉरल पुलिसिंग का सवाल उठता ही नहीं है। यू सी, इट्स इनसाइड योर बेडरूम। आप यहाँ आकर स्टेज पे कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये बात करण को समझ में आने लगी, तो ही हिमसेल्फ रिक्वेस्टेड अस टू कम एंड सी द फिल्म। और कल मैंने एक छोटा सा सुना जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था, और करण ने खुद माना कि शायद उसने स्टीरियोटाइप किया था 2008 में, और मगर उसके कुछ रीजंस थे, मगर ही हैज़ एक्सेप्टेड दिस फिल्म एज अ प्रोग्रेसिव वे, और इसीलिए वो बाहर आए हैं। ही हैज़ कम आउट टू सपोर्ट दिस फिल्म। सो नाउ करण इज़ माई फ्रेंड। मेरा सवाल है, अलीगढ़ फिल्म जो है किसी के लाइफ पे बनी है, उस कैरेक्टर को निभाते वक्त आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? देखिए, जो सबसे बड़ा चैलेंज था कि लोनली आदमी की, जो आदमी लोनलीनेस की या अकेलेपन का जीवन जीता है, उसके आँखों को पकड़ पाना, वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल काम था। एक लोनलीनेस बॉडी में दिखना, लोनलीनेस पूरे चेहरे पे दिखना, वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम था। मेरे ख्याल से ये मुझे लगा था कि अगर मैं इसको पकड़ पाया तो सीरस को पकड़ पाऊंगा। सेंसर की बात कर रहे हैं और एवरीबडी इज शॉक्ड दैट फिल्म हैज गॉट ए सर्टिफिकेट। कैन यू जस्ट थ्रो सम लाइट व्हाट ऑब्जेक्शंस हैज बीन रेज्ड बाय सेंसर बोर्ड? The film has not, they have proposed an A certificate. Let me clarify. They have proposed an A certificate which we have not accepted. We are taking it forward, and let me do that. Let me give them a fair chance. To be, in all fairness, when we showed the film to the censors were very courteous. They were more courteous than I have seen in the last 16 years of my career. I have never been asked to sit down in a censor board screening. They asked me to sit. They spoke to me with utmost politeness, and they tried their best to come out of their own shell. But unfortunately, it's not easy to come out. But sir, any specific reasons they gave to to propose? They've given me reasons. I mean, let me take the film forward. I'm right now, my anger is more at the trailer. You have sort of aborted the promotions of the film by certifying the trailer with an A certificate, and saying that the theme is adult.
What is adult in the theme of the trailer? Please tell me. Somebody here tell me what is adult in the theme of the trailer. Yeah, so please write about it tomorrow. Yeah, please talk to him. Yeah, please. Yeah, please. But he's not part of the censor board. He's part of a committee. So that committee, what they're doing right now is a process of going through all the problems that the censor board has been faced with and is facing right now. And that process is studying a lot of problems, and that's going to take several months. So I really can't answer that question. And they have a lot of backlog work. So I don't know where this is going to come. But I'm sure Hansal can speak to him, and I don't know where I come in over here. Really. No, I see that committee, but don't mix up the two things. That's a committee that has been appointed. The committee has been appointed to look into the working of the censor board and to suggest improvements. I mean, there was already one committee. There was a committee. They will come out with their own recommendation and their own observation. Like the Mudgal committee. Like the Mugdal committee. Which nothing has happened. Okay, check. but Hello. Let's talk about the film. No, the censor, we will fight it. हाँ मतलब I don't want to get into it right now. वो मतलब वो एक censorship पे एक मुद्दा है जिस पे हम we will have a dialogue separately. Let's talk about the film. Let's talk about better things. Now here I'll just take the moment of thanking Eros again and again for supporting the film, and I would like to call upon Samir Gokte. Please, Samir, come here. He's the representative here from Eros and Eros team. I mean, thank you very much, guys, in support. So, Samir is a very old friend of mine. He's not been picking up my phone since a long time. Samir, love you, man. I just thought that you should be part of the team who is standing on the stage. I mean, you should not be there. No, it is admirable that in today's times, Eros, when I narrated the subject to Eros, they accepted in 5 minutes. They said, make this film. And the fact that Eros backed it without any questions is the reason we are here today. And they are the ones we should be thanking first. Yeah.